good evening to all of you. We'll start with formal introduction. It will be very quick. As you know, I'm Amara, working as a specialty registrar currently in Walsall in colorectal surgery. I've done my FCPS surgery from Pakistan and then did MRCS. I've got my lovely colleague with me, Maheen Rana, who would introduce herself. Over to you, Maheen. Hello, everyone. I'm Maheen. I'm one of the surgical trainee FCPS. I've completed that, and currently I'm just in that scholarship program in Ireland. I'm currently in my second year of training in Ireland. Thank you so much, Maheen, for joining us today. She'll be helping us with your queries and moderating the session along with me. Thank you very much. It's a pleasure. Let's begin the fun. So, is the slide visible? Okay, so let's start. Maheen, can you see the slide? Yes, I can. It's perfect. Thank you. So, before we, this session is basically, this will be a brief overview of what MRCS is and how this exam works. But before we start, we should know why do we need MRCS. That gives us a drive कि हमने क्यों करना है. I hope most of the audience is from Pakistan, तो उर्दू में बीच में कुछ चलेंगे. So, karna kyun hai MRCS? This should be very clear in your mind, because if that's clear in your mind, you would be able to pursue it more dedicatedly. MRCS can get you GMC registration. MRCS is a mandatory requirement to enter into specialty training in surgery in UK. So in UK, there are certain levels that you work as. You work as a very junior doctor, like house officer, who graduate, and then for 2 to 3 years, they are junior house officers, senior house officers, like that. And then you become a registrar. That's a middle grade job. That's a job before consultant. So a registrar can be a trainee registrar, or it can be a non-trainee registrar. So if you want to enter into training, or if you want to work as a non-trainee registrar, you have to get this MRCS. Even if you have lots of years of experience, if you don't have this degree, you won't be able to work as a registrar. लोग जो है ना stuck हो जाते हैं as house officer. Fourth is to add up on your CV if you want to move to Gulf. तो it's very helpful. Okay. Next question is a lot of people ask कि GMC registration के pathways क्या होते हैं? So first is PLAB, as all of you know, and it would be replaced by UK MLA within the next few years. Second pathway is any Royal College exam, that is a membership exam or a fellowship exam. For us, as in surgery, it would be MRCS or FRCS. Medicine में, gynae में, there whatever Royal College exam उनका है, that will get you a GMC registration. Pakistan में previously FCPS anesthesia and FCPS pediatrics were recognized as qualifications eligible for GMC registration. Unfortunately, पहले उन्होंने FCPS pediatrics को निकाल दिया इस qualification में से, और I guess in December 2021 इन्होंने FCPS anesthesia को भी unrecognized कर दिया. Otherwise जो FCPS anesthesia pediatrics थे few years, if we talk about few years back, तो वो GMC registration करा सकते थे अपने FCPS पे. Third pathway is sponsorship scheme or MTI. This is basically when you don't have these qualifications, but you have some postgraduate experience back in your home country. तो आपको जो trust होती है वो आपकी GMC registration sponsor करती है, उसके पैसे देती है, और आपको मतलब certify करती है कि yes, this doctor is eligible for GMC registration. MTI की jobs जो है ना CPSP के through भी आती हैं. और सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि आप रैंडमली सर्च करें जब NHS जॉब्स में, तो वो स्पॉन्सरशिप की जॉब्स का ऑप्शन होता है, बट इट्स वेरी रेयर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस कॉलेज से करना है. सो देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस. कैन यू सी द स्क्रीन, माहीन? और ये आ तो नहीं रहा इसके फ्रंट पे? पैनल तो नहीं आ रहा कोई? No, it's fine.
ठीक I है, see. चलो, sorry. Okay, that's great. So basically, there are different royal colleges, four royal colleges, Royal College of Edinburgh, England, Glasgow, and Ireland. ये because this is an intercollegiate exam, आप किसी भी कॉलेज से दे दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल उसकी वो है, वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन आप पार्ट ए कहीं से दे दें, पार्ट बी कहीं से दे दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कब होते हैं एग्जाम्स? दे हैपन अराउंड द ईयर, एटलीस्ट 3 times इन ईयर होते हैं। MRCS A जो है जनवरी, मई और सितंबर में होता है। MRCS B जो है फरवरी, मई और अक्टूबर में होता है। इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं, पाकिस्तान में लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, और अब इस साल कराची में भी हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। पार्ट बी, अदरवाइज पार्ट ए तो काफी ईयर्स से पाकिस्तान में होता आ रहा है। When you book your part A exam, this is a like what happens exactly when you book your part A. You fill the exam application on the Royal College website, and then your contact, because ये integrated होते हैं because through a test center, तो आपको फिर test center will contact you around for your booking exactly the date of the test, और फिर your test happens. So this is sort of a brief scheme how it is booked. Now, if we talk about the exam, it has two parts, part A and part B. Part A is all written paper, and part B is all OSCE. So if you एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पार्ट ए में जो है वो IMGs का पासिंग रेशो बहुत अच्छा होता है वाइट्स या लोकल ग्रेजुएट्स से। पार्ट बी में जो है लोकल ग्रेजुएट्स ज्यादा पास होते हैं, और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं, बिकॉज पार्ट बी इज ऑल द हाउ डू यू परफॉर्म द क्लिनिकल और प्रोसीजर्स सारे जो है ना, बिकॉज क्योंकि यहाँ डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द सिस्टम पाकिस्तान में और यहाँ में, तो दैट इज द रीजन कि ऑस्की जो है वो नो IMGs काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं, विच आई फेस्ड माई सेल्फ। MRCS A की अगर बात करें तो इट्स अ 5 hour exam, 2 papers. There is a morning paper and an afternoon paper. Morning paper is all about applied basic sciences. It's a 2 hour, 3 hour paper. And then afternoon paper is a 2 hour paper, which is based on principles of surgery in general. It's quite an exhaustive exam because 5 hours का paper exam होता है, बीच में break होती है, but you have to be very very well prepared for this exam. पार्ट ए की अगर हम थोड़ी सी डिवीजन देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम, यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। उसी तरह से आप अपनी एफर्ट और यूज करें कि कितना मुझे फोकस करना है ऑन एनाटॉमी, बेसिकली these 3 subjects, anatomy, physiology and pathology. So most of the portion, almost half of the portion is from anatomy. और एज सर्जन आपको एनाटमी तो आनी चाहिए। मुझे अपने प्रोफेसर की बात याद आ गई। माइन डॉक्टर अमजद जो है वो there can be no more enough focus on importance of anatomy. So anatomy part paper 1 में, which is a 3 hour paper exam, it has 180 questions. इसमें से out of 180 anatomy के 75 हैं, physiology 45 and pathology 37. Pharmacology, microbiology, imaging and data interpretation, there are a few questions from them. Usually when you practice from the past questions or MCQs bank, वो आपके cover हो जाते हैं, but specifically these 3 subjects you have to study. Next, this is sort of मैंने एक pie chart बना दिया which gives you an overview के कितना percentage, almost you can see 42% of the questions will be from anatomy, so you have to grip your anatomy very well, and this will help you in part B also. So almost इतनी ही anatomy part B में भी आती है, so if you have to make your anatomy good, so do it well once you do it. Then coming to paper 2, this is principles of surgery in general. This is a 2 hour exam which happens in the afternoon of the same day, and it has 120 questions. इसमें जो 120 questions होते हैं ये आ जाते हैं अब प्योर जनरल सर्जरी के। अब किस तरह के आते हैं? जनरल सर्जिकल कंडीशंस होती हैं, उसके बाद पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट है और ट्रॉमा है, ये मेन इसमें है। सर्जिकल की पीडियाट्रिक भी है, मेडिको लीगल केसेस भी हैं, बट इसका प्रोपोर्शन बहुत कम है, विच वी विल सी इन द next slide. So if you see that most of it is general surgical conditions like 37%, and then perioperative management and trauma contribute around 25-29% each. This division is very important to remember because now this will help you focus on how much I have to read
इस हिसाब से आप जो है वो अपनी तैयारी करिएगा. Then we move to, अब पढ़ना कहाँ से है फॉर MRCS A. बिकॉज दिस इज अ वेरी क्विक सेशन, इसमें मैं हर चीज तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, जस्ट एन ओवरव्यू. बट if whatever your queries are, you can inbox, you can write in the chat box, you can contact me later. All are always welcome. In terms of books, Referee is a very good book. This is for basic sciences. इसमें जो basic sciences हैं बहुत अच्छी हैं. The good thing about this exam is कि basic sciences बहुत applied basic sciences आती है clinical. It's not कि आपसे जो है ना वो बिल्कुल ही नॉन क्लिनिकल सवाल पूछ लेंगे. अगर एनाटॉमी पूछेंगे, इट विल बी क्लिनिकल, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एवरीथिंग विल बी क्लिनिकल. सो दिस इज अ वेरी गुड बुक. उसके बाद MRCS A रिविजन नोट्स हैं. मैंने आई विल शो यू द पिक्चर्स सो दैट यू गेट द राइट बुक. ठीक है. उसके बाद एक बुक, दैट्स माय एक्सपीरियंस, कि एक बुक आपने एनाटॉमी के लिए फोकस कर लेनी है. वट एवर यू रेड इन योर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में आपने जो भी पढ़ी थी, आई लाइक स्नेल्स और BRS, जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें से, या कोई और बुक आपकी जो भी मेन टेक्स्ट बुक थी एनाटॉमी की, डू दैट. टीच मी एनाटॉमी इज अ वेबसाइट विच इज अ वेरी गुड. आई लाइक इट बिकॉज व्हेन यू आर एट वर्क, आपने जस्ट फ्री वेबसाइट है, आपने इसको खोलना है, उस पर सेक्शंस बने होते हैं, अपर लिम, लोअर लिम. इसको आपने खोलना है, अपर लिम के बहुत कंसाइज और बहुत अच्छी तरह से उसको क्लिनिकली कवर किया हुआ है. क्रिस्प और ATLS, ये दो कोर्सेज हैं. थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर इन पाकिस्तान, क्योंकि इनकी फीस काफी ज्यादा है. इवन इफ यू कांट डू द कोर्सेज, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट ATLS का मैनुअल आप पढ़ लें, क्रिस्प का मैनुअल पढ़ लें. दीज विल बी अवेलेबल. आप कांटेक्ट करें, आपको मिल जाएंगे. बेली एंड लव, इफ यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी, दैट्स योर बुक. आप ये तो आपने पढ़नी है. और मैंने जो अपना पार्ट A दिया था, वो दिया था immediately आफ्टर IMM, तो that's all what I did. मैंने IMM के लिए बेली एंड लव की हुई थी. That really helped me for the exam. ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, इट रियली हेल्प्स. ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तैयार करते हैं, योर पेस एंड एवरीथिंग. इसमें EMRCS लेने, पास्ट टेस्ट लेने, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. देयर इज एन ऑप्शन टू शेयर दीज ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि आपकी प्रोग्रेस और जो उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं पासवर्ड, उसकी प्रोग्रेस फिर मिक्स होती है. इफ यू आर ओके टू बेयर विद दैट, तो आप कर सकते हैं. उसके बाद जो है, सो ये जो है दिस बुक, बेसिक साइंसेस फॉर MRCS, दिस इज रेफरी. और दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर बेसिक क्लिनिकल साइंसेस. MRCS पार्ट A एसेंशियल रिविजन नोट्स, इसकी दो बुक्स होती हैं, बुक 1 एंड बुक 2. मैं ये पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने बेली एंड लव की हुई थी. तो इट्स बेसिकली कि आपको जनरल सर्जरी का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है जनरल सर्जरी में. अगर आपने 1-2 साल काम किया हुआ एटलीस्ट एज अ ट्रेनी या जनरल सर्जरी में, तो फिर आपको के लिए एग्जाम आसान हो जाता है. ये जो थर्ड पिक्चर है जिसमें रीजन्स बनी हुई है, बेसिक्स, हेड और नेक, दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट टीच मी एनाटॉमी. दिस इज अ वेरी नाइस वेबसाइट. आई वुड रिकमेंड यू ऑल. दिस इज अ फ्री वेबसाइट, तो आप कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. Now let's come towards MRCS B. MRCS B is quite a challenging exam because इसमें सारा interactive है. Theory, personally I feel आप लोगों का opinion differ कर सकता है, but I personally feel कि theory is always easier for us because हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है. Interaction and OSCE is a bit difficult, challenging because आपने उसमें जो है वो interact करना होता है, quick होना होता है, आपने सोचने का टाइम नहीं होता, आपकी performance, आपका behavior, हर चीज मैटर करती है. तो इसके there are total 17 stations in this exam. Every station is 9 minutes long. You get 1 minute for the changeover. तो इसमें कोई ये नहीं होता कि जो 9 minutes होते हैं वो प्योरली स्टेशन के अंदर ही होते हैं. वो क्लॉक ही जब स्टार्ट होती है जब आप क्यूबिकल में एंटर हो जाते हैं. और बाकी जो चेंज ओवर हो रहा होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, वो उसमें 2 मिनट्स अलग से उन्होंने रखे हुए होते हैं, और बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होता है. This covers two broad content areas, knowledge and skills. Again, knowledge, ये 8 stations हैं और इसमें भी anatomy का major proportion होता है. So if you do your anatomy well for MRCS part 8, it's going to help you in part B also. Then comes to skills, जहाँ पे IMGs बहुत struggle करते हैं. मैंने भी struggle किया था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी. मैं first time exam देने गई थी, I failed, और मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है. तो एक लीजन था, उन्होंने कहा कि एक्साइज दिस लीजन, और उसमें there was a scale given and there was a sterilized marker given, but in Pakistan we never use that.
तो मैं तो कुछ नहीं है, खुद ही मैंने उसको जैसे द वे वी डू इन पाकिस्तान मैंने वैसे ही किया था। बट यू हैव टू, ये सारी चीजें होती है जिस पर आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपने एलर्जीज चेक की नहीं की, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। नॉलेज अगेन, अब इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि नॉलेज के जो है वो 8 स्टेशंस में किस तरह उसकी वो है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। इसमें 3 सर्जिकल एनाटॉमी के स्टेशंस हैं, 2 सर्जिकल पैथोलॉजी एंड 3 अप्लाइड सर्जिकल साइंस एंड क्रिटिकल केयर। सर्जिकल एनाटॉमी आपको पता ही है, पैथोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। आई एम सॉरी, आई नेवर लाइक पैथोलॉजी। ये बहुत ही रट्टा टाइप स्टेशंस होते हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, मटेरियल होता है, यू हैव टू मेमोराइज दैट। नोबडी कैन हेल्प यू इन पैथोलॉजी। उसके बाद जो है वो सर्जिकल साइंस और क्रिटिकल केयर, इट्स गुड। जो जैसे आईसीयू इस तरह के सिनेरियोज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं बर्न्स के, तो ये वो होते हैं। स्किल्स में व्हेन यू कम टू स्किल्स, इसमें 4 कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टेशंस होते हैं और 5 यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में 2 हिस्ट्री टेकिंग होती है, आपने हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट होता है, आपको बता देते हैं सिनेरियो, दिस इज अ सिनेरियो, यू हैव टू टेक द हिस्ट्री। और 1 काउंसलिंग का स्टेशन होता है जिसमें आपने पेशेंट को बैड न्यूज ब्रेक करनी है, आपने पेशेंट को ये बताना है कोई ऑपरेशन कैंसिल हो गया उसका बताना, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं वो। 4th स्टेशन कम्युनिकेशन का होता है रेफरल, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट देखा, आपने उसको रेफर करना है वेस्कुलर, यहाँ पे यूके में बहुत इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफर्स बहुत होते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट देखा हु नीड्स अ वेस्कुलर सर्जिकल एडमिशन, तो आपने ऑन फोन होता है ये, वहीं पे आप फोन रखा होता है, आपने फोन पे उसको रेफर करना होता है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, पैटर्न होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और उसी की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। कमिंग टू क्लिनिकल एंड प्रोसीजरल स्किल्स, इसमें 3 फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। For example, there is a list of around 22 examinations, ear examination, abdominal examination, respiratory. तो इन सब की तैयारी आपने करनी होती है बहुत अच्छी, और वही है कि you have to be very flick in it, because 5 minutes होते हैं for doing the examination, and there is a like 3-4 minutes for question answer session. So you have to make sure that you finish that examination in those 5 or 6 minutes. उसके बाद जो है जेनेरिक स्किल्स लाइक suturing और excising a lesion और putting a chest drain, इस तरह के होते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स अगर आप जनरल सर्जरी के ट्रेनिंग है तो आप ये कर ही रहे होंगे, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू फॉलो अप सर्टेन प्रोटोकॉल एंड यू हैव टू मेक श्योर, उनके पास एक लिस्ट होती है कि ये सारे काम आपने किए हैं। इन आवर फ्यूचर सेशंस हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। माय प्लान इज टू कैरी ऑन विद MRCS पार्ट बी, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव थिंग, इसमें आप हमें हेल्प चाहिए होती है। MRCS बी के रिसोर्सेज क्या हैं, उसमें जो है वो दिस इज अ सेट ऑफ टोकी और सलाह नोट्स। अगर आप कोई भी MRCS के ऑनलाइन ग्रुप्स देखें फेसबुक पे, तो दिस इज ये कोर्सेज करा रहे होते हैं लोग, और इनके नोट्स अवेलेबल भी हैं, फ्री भी अवेलेबल हैं, बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ऑल्दो ये पास पेपर्स हैं, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट दे कवर एवरीथिंग, एवरी सिंगल स्टेशन विच कैन कम इन योर एग्जाम इज इन दीज नोट्स। फिर एक पास द MRCS की सीरीज है, इट्स अ वेरी गुड सीरीज, आई कैन गिव यू द PDF फॉर दिस। इसमें जो है हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन, इसका पूरा पैटर्न है, सिनेरियोज हैं, इसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। टीच मी एनाटॉमी, अगेन द सेम वेबसाइट विच आई डिस्कस्ड अर्लियर। GK Medics की वीडियोस, दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग वीडियोस फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। आई वुड सजेस्ट कि आपने ये वीडियो देखनी है, आप ये वीडियो देखें, अपना पैटर्न बना लें कि मैंने इस तरह एग्जामिन करना है, और उसके बाद जो है वो उसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है प्रोसीजरल स्किल्स भी आपने इसकी एक अलग बुक होती है, यू कैन फाइंड दैट इजीली। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दिस लुक्स अ बिट स्कैरी, लेकिन इस तरह का बेसिकली एग्जामिनर्स के पास ये मार्किंग शीट होती है। इसमें अगर आप ये देखें कि जो एनाटमी सर्जिकल पैथोलॉजी है उस पर एक ही एग्जामिनर होता है। उसके बाद जो सर्जिकल साइंसेस में भी एक एग्जामिनर होता है, जो नॉलेज बेस्ड एरियाज होते हैं उसमें एक एग्जामिनर बैठा हुआ होता है। जो क्लिनिकल और इस तरह के कम्युनिकेशन के हैं उसमें जो है वो 2 एग्जामिनर्स होते हैं, एक आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है और एक खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा होता है या मार्क कर रहा होता है, लेकिन दोनों एग्जामिनर्स आपको मार्क करते हैं उसके ऊपर।
स्टेशन पे। टाइम कितना चाहिए होता है ये, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रफ आइडिया, हर एक की अपनी पेस होती है, हर एक का अपना वो होता है कि आप कितना किस हिसाब से तैयारी करें। इफ यू आर फुल टाइम वर्किंग एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 6 months, इफ यू आर नॉट वर्किंग फुल टाइम पार्ट टाइम काम करें तो 3 months कैन बी इनफ, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Expenditures, this is a very important question that IMGs ask. MRCS Part A की fees जो है, which I have just looked up, 578 pounds है पाकिस्तानी रुपीज में, इट इज अराउंड 2 lakh. पार्ट बी की फीस अराउंड इसकी डबल है, 1000 समथिंग, और पाकिस्तानी रुपीज में 370 बनती है. देन अगर आपको जीएम से रजिस्ट्रेशन करानी है तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की 420 है पाउंड्स. और इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम अगर आपने देना है, ओईटी भी दे सकते हैं आप, आइल्स भी दे सकते हैं, इट्स फॉर यू, जो भी आपको एग्जाम देना है. तो आइल्स डिफिकल्ट एग्जाम है, आइल्स एकेडमिक, इफ इन कंपैरिजन टू ओईटी, और उसका पास रेट थोड़ा मुश्किल है, जो आपको रिक्वायर्ड ग्रेड्स मुश्किल से आते हैं, लेकिन उसकी फीस आती है. और ओईटी जो है विच इज कंपैरेटिवली इजियर, तो उसमें जो है वो उसकी फीस ऑलमोस्ट डबल द आइल्स ऑफ 110. ये रिसोर्सेज हैं, इंटर कॉलेज वेबसाइट है, इस पे आप जाके आपको हर चीज डिटेल में मिल जाएगी, वट एवर एग्जाम गाइडेंस पैटर्न एवरीथिंग. Teach me, write me the website again. I would be very keen to have the feedbacks because it will help us कि आगे हम क्या improvements कर सकते हैं. Now I'll hand over to Maheen for the question and answer session. So if anyone of you have any questions, you can ask. Someone on the chat asked about, yes, so part A has 2 parts, like Dr. Amara mentioned. So part A has 2 parts. Part like one part is just the basic sciences, and the other part is very clinical surgically oriented. Does anyone has any questions? Okay, so is DO, okay, one second. We'll start from the top. So there's an abbreviation that I don't understand. Is DOHNS replaced with MRCS ENT? Do you have any idea? No, but what I know that I think MRCS ENT is something, because जब मैंने इंटर कॉलेज की वेबसाइट विजिट की थी तो there is something MRCS ENT. I'm not sure about this DOSS thing. Sorry. Yeah, so Sidra is asking about the dress code for part B for female doctors. So the dress code, you have to be simple. You have to be presentable, elegant. Bare below the elbows का rule है कि आपके वो ये पूरा elbows से नीचे आपका पूरा exposed होना चाहिए because of infection control policy. मैंने अपने एग्जाम में आई वो शॉर्ट कुर्ता विद माई स्टोल. ये जो भी स्टोल होता है, कुछ भी चीजें हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, आपको टक इन करना होता है अपनी शर्ट के अंदर. और स्लीव्स मैंने रोल अप कर ली थी, कोई मसला नहीं है, कंफर्टेबल और बहुत ही डिसेंट आप अटायर ले लें. I have a question. Do you have to bring anything for your part B exam with you? No, absolutely not. Everything is there. सब कुछ वहीं पे होता है, स्टेथोस्कोप भी वहीं पे होता है, सारी चीजें वहीं होती हैं. You just have to bring yourself. Yeah, just yourself. Okay. With that, please could you show the slide where the application process was mentioned? So Yes, we sharing can. the presentation with everyone. Would you? We can go back. We can just go back. So this one is just for MRCS A, because MRCS A में you book the test on the website, और फिर आपको जो पियर्सन टेस्ट सेंटर है, बेसिकली ये एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, तो ये आपको कांटेक्ट करते हैं रिगार्डिंग टेस्ट स्केड्यूल एंड योर वेन्यू एंड ऑल दोस डिटेल्स. Yeah. So Maz is asking if you're in Pakistan and we want to exam in UK Part B, is it possible? Why not? आप कहीं पे भी जाके एग्जाम दे दें, आपके पास पैसे होने चाहिए. यूके में आना इज अ बिट लाइक आपके टिकट्स वगैरह का खर्चा है, लिविंग का खर्चा है, अदरवाइज लोग आते हैं. इट्स योर विश, एंड कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी आपको पार्ट भी देना है. देयर आर मिथ्स कि कहीं का पासिंग रेट ज्यादा है, कहीं का कम है. आई डोंट एग्री विद दैट. आप जो है वो कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं. Okay, so the person who asked about MRCS ENT just made clear that that thing meant diploma of head and neck surgery.
We unfortunately don't know anything about that. I don't know. Yeah, seriously. No, I'm sorry. Yeah. Apologies. Okay. So how does one get into surgical training in Ireland? Mine, you We would be the only best have, person to yeah, we only reply. have like 9 minutes left. I can come Yes. back to it if you have enough time. No, you can reply now. I think let's answer as many queries as we Because we can. have plenty of questions. So it's not impossible to get into training in Ireland, surgical training in Ireland now. So it's just basically it's total 8 years, 2 years of basic surgical training and 6 years of higher specialty training. So you just apply for it. They usually have applications once a year, and you just apply for it. The only thing is that you have to have some face value. You have to be here and make some connections. So you can just start from non-surgical training SHO job, and then the applications arrive. You just apply for those, and it's just very easy to get into basic surgical trainings, even for the immigrants for Pakistani passports. But the main thing is to get into specialty training. You have to be really, really good. You have to prove yourself. It's not impossible, but you should have like good amount of publications in your hand, audits. So you just have to prove yourself. They usually prefer the Irish passport people, and you're always below them. But if you are really good and there are people who know you, you can definitely get into training. So this is just the big thing that I just highlighted. Let's move on. I'll just add in this in comparison to that from Ireland to UK, it's a bit different. Like यहाँ पे आपका portfolio अच्छा है, it doesn't matter anymore कि आप IMG हैं या आप local graduate हैं. If your portfolio is good and there are certain scores कि आपकी publications हैं, audits हैं, QI हैं, teaching qualifications हैं, number of cases ठीक हैं, तो you have equal opportunity in comparison to local graduates to enter into surgical training. Yeah. All right, moving on. So Ramsha is asking, is MRCS Part B similar to FCPS 2 clinical exam? No, it's quite different. I think the best way would be to answer these questions. Once we start sessions in MRCSB, you will come to know how different it is. It is entirely different. Entirely different. Anam is asking, do you have any plans of providing complete preparation course, Dr. Mara? So for MRCS Part B, yes, that's what I'm planning. We will be doing some online sessions, and in June I'll be coming to Pakistan, and we'll do a proper hands-on session with mock examination. That's what my plan is. Because Part A is all आपको खुद ही पढ़ना है, self-study. It's all knowledge-based. Part B is lots of history examination and all those things which I have learned. I will try to help you. So yes. Okay, the other question is, if one has to give exam for RCSI, he or she has to pay in euros. I can answer that. It really doesn't matter. You just have to make a payment. They just need money. So if you have a Pakistani account, it doesn't really matter. So whatever, it would do. Money. Yeah. So Noorul Ilma is asking, can you please tell a bit more about OET and IELTS? And it's for MRCSB or GMC registration. Oh, sorry, I didn't get your question. Maybe, like she's basically asking if a bit more about OET and IELTS, and do we need it for the GMC registration or MRCS? Yeah, definitely for GMC registration. It's not for MR. For PLAB, it's for PLAB you need OET or IELTS, but for MRCS you just need your MBBS degree and you can do your MRCS. But for GMC registration, definitely you need OET or IELTS. Okay. So Majid is asking, when will we be able to know in further sessions regarding sessions regarding MRCSB? So what are you planning to do? What I'm planning to do, I'm planning to cover the skill station. We'll start from history taking. We'll do some sessions on history taking, and then like we will progress. We will try to cover all the 9 stations of skills basically. Okay. Requesting a training session for audit. Yes, that's my next plan. I will be doing, I'll try to do it as a workshop sort of thing so that we can, whoever attends will be learning it. Like we'll do it in steps. हम साथ साथ करते जाएंगे. So by the end of the session, आपका कोई ना कोई audit project ready होना चाहिए. Okay, so Tahir is asking the right time for the Q Bank subscription for MRCS Part A. I would say 6 months, at least 4 to 6 months. And
they usually offer 4 months, like EMRCS has like a 4 months plan, which is 35 pounds, and a 6 months plan, which is 45 pounds. So I would say get the subscription at least 6 months before. If you want to add anything, Dr. Mara. No, I think you are the best person at this time. Okay. Sorry. Okay. After MRCS Part A, to apply for Part 2, how much time we have to expire Part 1? There's no expiry date for Part 1, if I'm No, not but wrong. you have to give Part B within 7 years. Yeah, or you have 6 attempts, so total. Yeah, So like sort of. It's not like a lifelong. हमने छोड़ दिया. Within 7 years, you have to clear Part B. 7 years, and you only have 6 attempts in Part 1, Part A, basically. Okay. Okay, so Madhuri is asking further in how many days, because I have my exam on May, 7th of May. Which exam do you have on 7th of May? I think he's Majid? talking about MRCS A. A or B? I think he was asking about B because he wanted to know about further sessions on Part B. So Part B. I will try. I will try to do as much sessions, but I can only do limited due to my work commitments. So I'm not sure about that. If you there's a have any WhatsApp. specific question, you can inbox me. Yeah, and there's a WhatsApp group for the May people who are attempting exam on May. So I don't know if you're on it or not, but we can connect you to that after the session. Let's see. What about courses for MRCSA? Should we join? Unless you have so much, unless if you have plenty of money, I wouldn't suggest, because it's purely a knowledge-based exam. It's all that you have to prepare. आपको कोई याद नहीं करा सकता anatomy. You can do some crash courses, but I don't think so. Yeah. Okay. Is it possible to get training job on the basis of MRCS in UK? Yes, it's mandatory. MRCS is mandatory to get a training job in UK. Getting a training job is complete. If you search my blog, you will find how to enter into specialty training. मैंने उस पे लिखा है, and proper. If you Google specialty training ST3 general surgery portfolio or person specification. I repeat, ST3 general surgery person specification or portfolio. You will find every information on Google. Okay, so Tahir, I am actually talking about MRCS Part B group. I am not on the Part A group. If anyone wants to be in that part for the Part B group, I don't know how to add. I mean, I can try send a link. Dr. Mara can share it on her Facebook story, I guess. Yes, And we can yeah, try. sure, I can. We Yeah. have just a minute left, so we'll start wrapping up the session. Maheen, I would give it to you to wrap up what went well, what could have been improved, and I guess it was very good. It was just, I think we were just had very limited time. We are not able to answer. I don't know if you guys, I mean, I'm so clear about the Part A part. I've just failed it twice, cleared it on the third time, but I would definitely want more input regarding Part B and different sessions. But overall, it was really good. I think it was a good highlight of what to expect, what to do. Someone who's just doing it for the first time has no idea where to start. But we definitely need more sessions. And I think it's always good to accept your failures. Failures are true, so don't be afraid. Prepare, do your best, and then good luck. Okay, and Tahir is asking he needs more session regarding MRCS Part A, so we can do that. Sure. Maheen, that's up to you. She has given Part A recently, and she's the best person to. So I will try to persuade Maheen and get some sessions from her. We can do that for sure. Yes. All right. Thank you so much, everyone, for attending. Thank you so much, Maheen, for your kind help. It was really helpful.